Amudoriya News. Voice of the marginal. Namaskar. Very happy to be back on Amudoriya channel. So Rajda, thank you very much for guiding me on this journey within Sikkim. Last time हम लोग ने बात किया था where you were asking the questions and I was talking about my journey in Northeast. So ये जो 20,000 किलोमीटर की मेरी जो यात्रा है भारत के पूरे बॉर्डर्स पे जो चल रही है साइकिल यात्रा, तो जब मैं अबाउट जून लास्ट वीक नॉर्थ ईस्ट में आया था, तो दैट्स द फर्स्ट टाइम आई केम टू नॉर्थ ईस्ट और मेरा प्लान था अबाउट 1.5 months आई विल स्पेंड इन नॉर्थ ईस्ट, बट नाउ इट्स अबाउट 6 months एंड आई एम स्टिल हियर. तो मतलब यहाँ का जो रिच और कॉम्प्लेक्स कल्चर है, आई हैव बीन रियली फैसिनेटेड. और आपसे बात करने के बाद पता चला कि मतलब ये जो पूरा इट्स अ पार्ट ऑफ हिंदुकुश रीजन, एंड हिंदुकुश रीजन हैज अ रिच हिस्ट्री and it has contributed a lot to the earth as a whole, not just a nation or a region or a specific segment of population. पूरी पृथ्वी में उसका बड़ा योगदान है. तो आप जरा इसके ऊपर थोड़ा बता सकते हो हिंदुकुश रीजन क्या है और उसका क्या योगदान रहा है पृथ्वी के डेवलपमेंट में? सही बात है. हमारे जितने भी अमुदोरिया न्यूज के जितने भी हमारे दर्शक हैं, सबको मेरा नमस्कार. और जयंत और मैं हम लोग फिर से वापस आ गए, अच्छा लग रहा है. और जयंत, शायद आपका ये 20,000 21,000 किलोमीटर के बाद हम लोग ये जर्नी विद इन का थोड़ा सा बात कर लेते हैं. जर्नी आउटसाइड तो आपने कर लिया 20-25,000 मतलब किलोमीटर, लेकिन उसके बाद जर्नी विद इन करना इसलिए जरूरी होता है कि अगर जितना हम बाहर की जर्नी कर रहे हैं उतना अगर अंदर की जर्नी नहीं करते हैं तो शायद हमारी जर्नी जो है वो इनकम्प्लीट रह जाती है. तो इसलिए हम लोग बोलते हैं एज मच एज यू ट्रैवल आउटसाइड यू शुड ट्रैवल इनसाइड. तो ये फिलॉसफी जो है ये काफ़ी पुरानी फिलॉसफी है और ये माना जाता है कि ये हमारी ये हिंदुकुश हिमालयन रीजन से गई हुई है. ये हिंदुकुश हिमालयन रीजन से इसलिए गई हुई है क्योंकि हिंदुकुश हिमालयन रीजन जो है ये वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 50-60% ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे है. तो इसके फ्रेश वाटर की जो कैपेसिटी है और इसकी जो मतलब बायोडाइवर्सिटी की जो कैपेसिटी है, तो यहाँ जो लोग रहते हैं इनको बहुत हाई बायोडाइवर्सिटी नॉलेज रहता है. तो इसलिए हमने बताया था कि ये बायोडाइवर्सिटी नॉलेज जो है इसको हम लोग अगर इंटरप्रेट करते हैं यहाँ लोगों के लिए जो मोस्टली ट्राइबल कम्युनिटी जिसका हम लोग कॉलोनियल पीरियड में एकदम नेग्लेक्ट किया था. हमने बताया था कि ये लोग ट्राइबल है, ये लोग नेटिव है, ये लोग क्या जानते हैं, लेकिन इनके पास जो बायोडाइवर्सिटी नॉलेज है, इनके पास जो इंडिजीनियस नॉलेज है, ये इतना रिच है कि बिना कोई इंडस्ट्रियल इंटरफेस से भी ये अपना जिंदा रह सकते हैं. क्योंकि सबसे ज्यादा नॉन सस्टेनेबिलिटी जो लेके आई है आज की इंडस्ट्रियल मूवमेंट लेके आई है. क्योंकि ये 300 साल का जो मूवमेंट है उससे शायद हम लोगों का जो है हम लोग मतलब हाफ ब्रोकन हो गए, क्योंकि ये हमारी नॉलेज और हमारी संपर्क प्रकृति के साथ जो था, नेचर के साथ जो हमारी रिलेशन थी, उससे काफी दूर हटा दिया और हम लोग सिर्फ कंज्यूमर बन के रह गए. और हम लोग जब कैंपेन भी करते हैं या ग्रीन ड्राइव्स करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं, ये नहीं करते कि हम कैसे जिएंगे, हम कैसे उसके साथ में जुड़े रहेंगे. तो इसमें जो है हमारी भारत में सिर्फ नहीं, ये सब कॉन्टिनेंट में अगर हम लोग देखते हैं क्लोजली, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं जीवन यापन. ये जापन का बात हम लोग काफी समय से, काफी जनरेशन से शायद हम लोग छूट गए हैं. जापन के बाद जापन जो है ये हमारी जो मानव सभ्यता की जो कैपेसिटी है अपनी थिंकिंग का, अपना थॉट प्रोसेस का, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि वॉट एवर वी डू it is what we are thinking, what is our mind takes us, what our mind makes us do. So naturally spiritual development of the mind is very necessary. और spiritual development of the mind तभी हो सकती है जब आप प्रकृति के साथ क्लोज रहेंगे. तो इसलिए हमने बताया as much as you travel outside you travel inside. और जब ये हिंदुकुश रीजन का मैप को आप देखेंगे,
एक तरफ में जैसे अमोदोरिया जो न्यूज, जो ये न्यूज का नाम आता है अमोदोरिया न्यूज, एक तरफ अफगानिस्तान वो साइड में आता है एकदम एक अमोदोरिया वाला एरिया होगा। एक चले जाइए एकदम हमारी जो ये हॉर्सशू है जो कि हमारी इंडियन पेनिनसुला के साथ, मलयान पेनिनसुला के साथ जब हम लोग ये हॉर्सशू बनता है, वहां देखिएगा लोहित जो कि ब्रह्मपुत्र की माइथोलॉजिकल ओरिजिन है, हम लोग डिहांग या सियांग को बोलते हैं, इज दी एस्टैब्लिश्ड ओरिजिन। बट अगर हम लोग माइथोलॉजिकली और हमारे इसको देखेंगे तो स्ट्रेट अलाइनमेंट जो है एक्चुअली वो लोहित की है। लोहित के साथ डिबांग, डिहांग या सियांग या आपका कामेंग या ये अलग अलग अरुणाचल की जो नदियां है वो आके मतलब लोहित के साथ मिलती है, और ये जो हमारी क्लस्टर है सदिया बोल के जो जगह है वहां आके वो ब्रह्मपुत्र बनती है, वो फर्स्ट नेविगेबल पॉइंट बनता है। तो ये जो एंटायर आर्च है, अगर ब्रह्मपुत्र से फर्दर आप चले जाएंगे टुवर्ड्स द ईस्ट, हाँ, देन यू विल, तब आप मिलेंगे, आपका सैल्विन रिवर आ गया, आपका इरावती रिवर आ गया, आपका मेकॉन्ग रिवर आ गया। तो ये जो सिविलाइजेशन बेस्ड है बियॉन्ड गंगा, तो ये एरिया के बारे में बहुत कम जाना गया, या कॉलोनियल पीरियड में ना मुगल्स ने उतना एक्सप्लोर कर पाया, ना हमारी पोर्तुगीज, फ्रेंच या जो भी कॉलोनियल जैसे इंग्लिश ये लोग जो आए उतना दूर तक ये जा नहीं पाए, बिकॉज दीज सोसाइटीज ओवर देयर ऑलरेडी दे वर independent societies and sustainable societies, so they couldn't be converted to be consumers. So naturally they didn't come under the colonial, so-called the colonial surface. They didn't come on the colonial surface. So for a very long time, following the colonial type of education and everything, we thought that tribal means the people who are who doesn't have any knowledge of the mainstream people. But we forgot that tribal were the people who has the entire knowledge how to live with nature happily, how to live with nature happily, where currency is not your currency like rupee or a dollar or this one, where your currency is actually nature. So getting that into understanding, getting that into your life was extremely important, because then from there you start your understanding of the Hindukush Himalayan region. Otherwise, without that, the understanding, without knowing the people over here, the journey that you did through Manipur, through Meghalaya, through Arunachal Pradesh, through Mizoram and all these places, and then now through Sikkim and the Darjeeling region, and further you will be following the Terai region along the Indo-Nepal border. So while you do this Indo-Nepal border, you have to understand that the entire top places, that is the headwaters, that is there, the Ganga and the Brahmaputra, where they originate from. So this plateau of Tibet along with the Himalayan region, it contributes so much to the world civilization that we are living today. आज जो हम लोग जी रहे हैं, जो जिंदगी जी रहे हैं, ये हमारी ट्रेड की जिंदगी है। तो ये ट्रेड की जिंदगी जो है, ट्रेड के साथ साथ में स्पिरिचुअलिटी जोड़ के ये फेथ आ गया, जैसे बुद्धिज्म आया, हिंदुज्म आया, इस्लाम आया, क्रिश्चियनिटी आया. सो ऑल ऑफ देम एक्चुअली ट्रेवल्ड parallelly. You cannot say that what traveled means first, whether it was the faith and the spirituality, or it was trade. But if you look very closely, you will find that it is actually faith and the spirituality that traveled ahead of trade, because the people who practiced this spirituality, they had this understanding of nature. And that is how the understanding of the community is involved, the community settlements. Through hundreds and thousands of years, the community settlement patterns changed. But they changed based on the natural availability. So this natural availability of this 50 to 60% of the freshwater resources, of the biodiversity resources that we have in this Hindukush Himalayan region, became the center of trade. So when you talk about tea that we are drinking today, so that tea has a 5,000 years old history. So this tea goes back to the root when the Chinese often call it Chamogodao. Chamogodao, the ancient tea horse root. So the ancient tea horse root almost matches the silk root that we are talking about. And also, so if you look at the mountain root, so it is the tea root, it is the silk root, and lower below through the rivers, through the Ganga and the Brahmaputra and the other rivers that meets the Bay of Bengal, the China Sea, and then further goes to the Indian Ocean, creating the maritime route. That became the rice route.
So this connectivity between this rice route on the Bay of Bengal and the mountain route on this Hindukush Himalayan region, the aerial distance where you travel just now is the smallest. So that's the reason when you talk about Tista becomes such an important seed for the Hindukush Himalayan region, because when you connect Tista, it's only a 300 kilometers river that meets the Brahmaputra, and above you have the glaciers over there. So from the glacier zone, from where the Tista and the Rangit river originate, from there it's only 300 kilometers that you go and meet the mighty Brahmaputra, and which goes and meets the the main Bay of Bengal through the Sundarbans. So this region, if you see very closely, not only this river, to the west we have the Koshi river and the Mai river. To the east as you go, you have the other rivers like Jaldhaka, Torsha and the Manas river, Manas Beki river. So all these rivers that connect the Brahmaputra, and beyond Brahmaputra, when Mahananda and Koshi it meets the Gangetic area, you have to think about the origin of these two rivers. Immediately the Hindukush Himalayan region will come to your mind. And if you look at the people over there, they have used their resource of weaving, using your magic hands, to tie knots between two threads. So it could be your clothes, it could be the walls of the bamboo walls of your house, it could be a roof with hay and palm leaf. So you could weave everything through knots, and you could weave it to a level where it could be the sunlight or the water that wouldn't enter this one. So it was easy to carry it during the train on these mountain routes and in these forest routes. And while this trade continues, you will see that the Buddhism being one of the major religions that changed entire Asia's perspective for the world, because Buddhism is something that connected, not only connected entire Asia, but gave a special status for Asia to the rest of the world, because then we realized that mind is the forerunner. Mind is everything. So the cultivation of mind with spiritual practices came into highlight with Buddhism, because then it was institutionalized through the viharas and the mahaviharas. So if you look at the mahaviharas, the juxtaposition, the positioning of this mahaviharas all the way from Nalanda, Udantapuri, Vikramshila, and then finally into Jagdallah and your Sompur Mahavihara. Sompur Mahavihara is just across the border from India, that is hilly border. When you are crossing through this chicken's neck, you will realize that one side is Nepal, one side is Bangladesh. Just across into Bangladesh is this Sompur Mahavihara, the fifth biggest university, which is supposed to be the center from where Atish Dipankara, he was both in Nalanda and Sompur Mahavihara before he went into Tibet. So Vihara is a university. Yes, Mahavihara is a university. So Viharas are colleges and schools. So the education from ashrams are places where it's the primary school. We often most of our religious leaders, they say that ashrams are places for religion, but it is not a place for religious practices. It is a place for your japon, for your spiritual practices, for your understanding of nature, for your understanding as a person to animal understanding. So this understanding starts from your living with nature in these ashramas. So the ashramas are always connected to nature. So the ashramas and the mutts that we have were actually primary schools. And from here, when you educated and went to the next level, when you needed medical science and physics, geography, astronomy and all these things, then you went to the viharas. And finally, before you become a guru or this one, you went through the education of Mahavihara. So all the ruins, all these remains of this Buddhist institutions that we see are the centers of enlightenment. So if you say that Buddha himself alone was enlightened, no. It is through this, through these centers that all the, yoginis, teachers, the Rinpoches that we talk of today were actually people who got enlightened through this institutional practices. So it is, when you look at this
positioning of the sun of these universities, you will find towards the north of it is the Hindukush Himalayan region, towards the south of it you go towards Bay of Bengal through the rivers. So you bring your knowledge from the Hindukush Himalayan region and you practice it with the people to the south of you. So this positioning of these institutions were very important, because not only Buddhism, but if you see that most of Hinduism, which is known as a Sanatan Dharma, most of the practices were here. After that, Jainism, it is practiced here. Buddhism, it was practiced here. Even after Islam came into India, you will find that most of the sants and the sadhus and the faqirs, the culture of fakir, actually was along this area. So this was a region which was beyond religion. We didn't have the four walls of the so-called temples and mosques and churches and everything. So here the practice was the practice of inner vastu. So in the beginning, that's the reason I told you, as much as you travel outside, you have to travel inside to create this inner vastu. The outer vastu can be destroyed. The walls that people make, that is human made, can be destroyed, but your inner vastu cannot be destroyed. Your spirit is going to stay within you. So this Hindukush Himalayan region is an extremely contextual on today's date, because this still remains the energy of the world. So that is one of the reasons that, other than the natural resources, this energy that makes this the third pole and the most important pole of the world, and this is where the practice remains, Jayant. Very interesting, because before I entered Northeast and Yes. I was speaking to many people, they said these are all tribal regions and you really have to be very careful. So I was also initially moving very cautiously because I didn't know what I was getting into. But as I traveled across entire Northeast, almost every state, and spent a lot of time with the local tribal people there in almost each of the state, one thing which commonly strikes, एक जो चीज़ समझ में आती है कि ये लोग fiercely independent है, independent thinkers है, and they're very joyful. Yes. Now actually there's a element of corruption which is seeping in when we say now we are developing them and connecting them with mainland. So there is an element of corruption that is very visible. Yes. As at least a traveler is what I felt. Now, आपको क्या लगता है, मतलब आप अभी ये एरिया में आपकी बहुत जानकारी है, आप इसमें टूरिज्म जो आप सस्टेनेबल टूरिज्म जो प्रमोट कर रहे हो ये रीजन में, तो आपको क्या लगता है, मतलब जो क्लाइमेट चेंज और ये सो कॉल्ड डेवलपमेंट जो हो रहा है, उसका इम्पैक्ट ये हिंदुकुश रीजन में क्या हो रहा है? सी व्हाट हैज हैपेंड, जो एक्चुअली में हुआ है, जो हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, ये एक्चुअली इज अ प्रोसेस. हाँ, द चेंज इन क्लाइमेट हैज बीन फॉर एवर. हम लोगों ने देखा है, पहले कभी आइस एज था, आइस एज से निकल के हम लोग ये एज में आए, उसके पहले अर्थ का फॉर्मेशन का स्टेज था, अलग अलग एनिमल्स आए, वो अपने आप मतलब अपना एवोल्यूशन प्रोसेस से वो चले गए, दूसरे एनिमल्स आए, बट विद द कमिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स द एंटायर वर्ल्ड हैज चेंज्ड, बिकॉज हियर देयर वाज नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स बट हियर देयर वाज द इवॉल्विंग ऑफ द माइंड, एंड द इवॉल्विंग ऑफ द माइंड कैन ओनली हैपन व्हेन यू आर ट्रैवलिंग. So as a traveler, when you have realized that you are into this region is not to connect to the facilities, is not to connect to development, but to connect to happiness, which is a very important factor, because you can only be happy when you are self-sustained. You are not running after, getting some money, you have a target for fulfilling, for getting some money, and then fulfilling your basic needs of food, clothing and shelter, and also the practice of spirituality, that is your japon. So when you are off the greed over there, so naturally what happens is your greed goes down. Then what comes forward is your knowledge of connecting the nature. प्रकृति को कैसे हम लोग जुड़ेंगे, उसका जो ज्ञान है,
हाँ, उसमें हम जुड़ रहे हैं। मतलब जो हम लोग प्रैक्टिस बाकी वर्ल्ड में कर रहे हैं वो अज्ञानता है, मतलब वो हम लोग अज्ञान है। तो ये हम लोग जो मेन कोर नॉलेज होना चाहिए, जो ज्ञान होना चाहिए, वो ज्ञान से हम लोग काफी दूर चले गए। हम लोग किताबों में आ गए, हम लोग कंप्यूटर्स में आ गए, हम लोग मोबाइल्स में आ गए, हम लोग मतलब ऐसे दुनिया में हम लोग घूम रहे हैं जो दुनिया रियलिटी नहीं है। Amudarya News. Voice of the Marginal.